Hello friends, how are you? I hope good. Today again I have come back with another lesson. Today we'll be learning how to use would. It's very important topic and you have to watch the video till the end to get complete knowledge about it. Mainly would can be used in present as well as past. Okay, today we'll be learning how to use could in past. Okay, so it's going to be a very important session. So without wasting time, let's get started. देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे वुड को कैसे पास्ट में यूज किया जा सकता है. आई हैव ऑलरेडी मेड ए सेपरेट वीडियो ऑन यूज टू. यूज टू मीन्स व्हाट? व्हेन वी वांट टू शो एनी काइंड ऑफ पास्ट हैबिट्स. पास्ट का कोई हैबिट, आदत, पास्ट का कोई आदत. जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं वहां पे जाता था, आई यूज टू गो देयर, वो यहां पे आता था, ही यूज टू कम हियर. मैं इंग्लिश सिखाता था, आई यूज टू टीच इंग्लिश. इस तरह का सेंटेंसेस. Past use means used to. I have already made a separate video on used to. You can watch it from a playlist. But if you don't know used to, still you can express your past habits using would. We will be learning today how to use would for showing past habits. Let's start. देखिए दोस्तों, we use would to show past habits. Okay? Past habits means past का कोई आदत. Okay? Like how to use it? Subject plus would plus V1 plus object. Okay, using this formula you can create so many examples. I have created few. I am reading all the examples for you. Let's start. Number 1, देखिए, we would go there. हम वहां पे जाते थे. Okay, so you can also use used to. We used to go there. यहाँ पे used to आ जाएगा. ठीक है, used to. We used to go there. Same meaning. ठीक है, हम वहां पे जाते थे. अभी नहीं, पास्ट में. ठीक है, सी वुड सिंग वेल, वो अच्छा गाती थी, मीन्स गाना. सो यहां पे भी यूज टू यूज किया जा सकता है. ठीक है, उसके बाद यू वुड सिट ऑन दिस चेयर. यू वुड सिट ऑन दिस चेयर, तुम इस कुर्सी पे बैठते थे. अभी नहीं, पहले. आई वुड टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता था. कब? अभी नहीं, पहले. ओके, अगेन आई एम रीडिंग. वी वुड गो देयर, हम वहां पे जाते थे. सी वुड सिंग वेल, वो अच्छा गाती थी. यू वुड सिट ऑन दिस चेयर, तुम इस कुर्सी पे बैठते थे. आई वुड टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता था. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट यूजिंग पास्ट हैबिट्स, ईदर वी कैन यूज यूज्ड टू और वी कैन यूज वुड. ओके, now question comes. In each and every video, generally I tell one thing, that each and every sentence can be divided into 4 parts. Number 1 positive, number 2 negative, number 3 interrogative, number 4 negative interrogative. There also you can do it. We would go there, हम वहां पे जाते थे. We would not go there, हम वहां पे नहीं जाते थे. Would we go there? क्या हम वहां पे जाते थे? Question. Would we not go there or wouldn't we go there? क्या हम वहां पे नहीं जाते थे? Okay, again. She would sing well, वो अच्छा गाती थी. She would not sing well, वो अच्छा नहीं गाती थी. Would she sing well? क्या वो अच्छा गाती थी? Wouldn't means would not. She sing well, क्या वो अच्छा नहीं गाती थी? In this way you can make 4 types of sentences and each and every part is very important to speak English properly. Okay, if you know only one part you will face some problems. You can convert only one type of sentences, but if you want to be an impeccable communicator, you have to learn each and every part properly. Okay, I hope you understood this one. Now we will move forward to some other uses of would. So let's get started. देखिए दोस्तों, would का सेकेंड यूज, ये भी पास्ट है लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. ओके, सो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू लर्न इट प्रॉपरली. अच्छा, सो लिसन टू मी प्रॉपरली व्हाट आई एम गोइंग टू टेल. देखिए, we use would as the past form of will. What I told? We use would as the past form of will. How? When we go directly from past to future, that time will becomes would. What I told? When we go directly from past to future, okay, without giving any stoppage at present, that time will becomes would. I know you did not understand it. So I will give an example, okay, to make you understand. See, देखिए, ये आपका टेंस. ठीक है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस. What I told you, past tense, present tense, future tense. Okay, now
if we go from if we go from present to future then will, ठीक है, then will, प्रेजेंट से अगर फ्यूचर है तो will होगा, अगर पास्ट से डायरेक्टली फ्यूचर में जाएगा कोई सेंटेंस then this will become would. ओके सो अगर कोई पास्ट में बोलेगा, पास्ट में अगर कोई बोलेगा फ्यूचर के बारे में, ठीक है, व्हाट आई टोल्ड, इफ समबॉडी टेल समथिंग अबाउट फ्यूचर, स्टेइंग एट पास्ट, दैट टाइम will become would. Okay, now I will give you some examples to make you understand. Okay, then you will understand. See, देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल है, he told me that, वो मुझे बोला था कि he would help me. ओके वो मुझे मदद करेगा, वो मुझे बोला था कि वो मुझे मदद करेगा. ओके कब बोला था? पास्ट में. कब मदद करेगा? फ्यूचर में, है कि नहीं? पास्ट फ्यूचर. प्रेजेंट इज मिसिंग. प्रेजेंट मिसिंग है कि नहीं? वो मुझे बोला था कि वो मुझे हेल्प करेगा. कब बोला था? पास्ट में बोला था. हेल्प कब करेगा? फ्यूचर में करेगा. यहां पे प्रेजेंट मिसिंग है. दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज वुड इन प्लेस ऑफ विल. I hope you understood it. If you have problem, you can watch the video 2 or 3 times. Okay, maybe you may have some problems. You may face some problems. Okay, while understanding. So you have to watch the video 2 or 3 times. Then definitely you will understand it. Next example. He promised me. वो मुझे promise किया था. क्या? That he would stay with me. वो मुझे promise किया था कि वो मेरे साथ रहेगा. वो मुझे promise किया था कि वो मेरे साथ रहेगा. Promise कब हुआ था? Promise past में हुआ था. कब रहेगा? Future में रहेगा. Present missing है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए will के जगह पे would हो चुका है. So if something happens in past, if somebody tells something in past, okay, about any future event, okay, here present is missing, that time will become would. I hope you are getting it. Next one, he told me that, वो मुझे बोला था कि, क्या बोला था? He would not speak Hindi. वो हिंदी नहीं बोलेगा. वो हिंदी नहीं बोलेगा. So he told me कब बोला था? पास्ट में. ओके और क्या नहीं करेगा? वो हिंदी नहीं बोलेगा. कब नहीं बोलेगा? फ्यूचर में. प्रेजेंट मिसिंग है कि नहीं? ओके सो दैट टाइम will become would. ओके ऐसे करके करना है. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड इट. अगेन आई एम रीडिंग वंस अगेन फॉर यू. he told me that he would help me. वो मुझे बोला था कि वो मुझे मदद करेगा. Again, he promised me that he would stay with me. वो मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ रहेगा. He told me that, वो मुझे बोला था कि he would not speak Hindi. वो हिंदी नहीं बोलेगा. Okay, I hope you understood this one. I have taken only few examples, but when you practice, you need to take more and more examples. Okay, how much you practice, that much you learn. Okay, so keep doing practice. I hope you understood this video. If you like this video, don't forget to subscribe to our channel to get more videos like this, and don't forget to hit the like button. So that's all for today. Next day again we will meet and we will learn something new. For today, thank you. Thanks for watching.